Hi everyone, today we will be starting with exercise 3.3. So let's do the first question. From the two regression equations find R, that is the correlation coefficient x bar and y bar. तो हमें ये दो रिग्रेशन इक्वेशंस दिए हुए हैं और हमें R, x बार और y बार ढूंढना है. सबसे पहले काम करते हैं, x बार और y बार ढूंढ लेते हैं, वो बहुत इजी है. क्या करना है उसके लिए? वी हैव टू सॉल्व दीज टू इक्वेशन साइमल्टेनियसली. तो फॉर दैट बेसिकली लेट मी रीअरेंज दिस. सो मैं 4y को इस साइड पे लेके जाती हूँ, 15 को इस साइड पे ले आती हूँ. तो आई गेट 9x minus 4y is equal to minus 15, right? And here I get 25x minus 4y is equal to 17. ठीक है, मैंने बस x और y को एक साइड पे ले लिया है एंड देन आई एम टेकिंग द कॉन्स्टेंट्स टू द अदर साइड. थोड़ा इजी हो जाएगा इस तरीके से सॉल्व करना. अब इसके बाद हम इन दो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं. सो इफ आई सब्ट्रैक्ट, दिस बिकम्स माइनस, दिस बिकम्स प्लस एंड दिस इज ऑल्सो माइनस. सो आई गेट ऑन सब्ट्रैक्टिंग दैट 25 minus 9, which will be basically minus 16x, is equal to, over here we have minus 32. So x is equal to 2. एंड जो भी आंसर आता है जब हम इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं वही हमारे x बार और y बार का वैल्यू होता है. सो x बार इज एक्चुअली इक्वल टू 2 ओवर हियर. लेट मी सब्स्टिट्यूट दिस इन वन ऑफ द इक्वेशंस टू आल्सो फाइंड y बार. सो आई विल पुट इट इन द सेकंड वन. 25x इज इक्वल टू 4y प्लस 17. x को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है तो दिस बिकम्स 50 माइनस 17 is equal to 4y. So now this becomes 3, तो 20 हो जाएगा and then और 30 रह जाएगा. So 33 is equal to 4y and therefore y is equal to 33 divided by 4. If I divide this, first 4 8s is 32, 1 रह जाएगा and then after that मुझे decimal लगाना पड़ेगा तो that will become 10. तो that will be 4 2s 8, फिर 2 रह जाएगा, डेसिमल की वजह से 0 लग के ये 5 हो जाएगा. सो y इज इक्वल टू 8.25. सो वी हैव गॉट आवर आंसर दैट x बार इज इक्वल टू 2 एंड y बार इज इक्वल टू 8.25. दिस इज द वैल्यू फॉर x बार एंड y बार. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, सो वी हैव ऑलरेडी फाउंड दिस. नाउ आवर नेक्स्ट एम इज टू फाइंड r. Now to find r from the regression equations, we need to find the regression coefficients. Okay, so we need to basically find byx and bxy. अब इसके लिए I have to decide कि which of these lines is actually y on x and x on y. तो उसके लिए मैंने मेथड पढ़ाया था solved examples में. Let's do it again. So suppose out of these two lines I choose that let the first line be the line of y on x. तो suppose 4y is equal to 9x plus 15 is the regression equation of y on x. Okay, and so therefore I can say that y को अकेले रखो एक साइड पे अगर y on x ले रहे हैं तो, and therefore y is equal to 9x divided by 4 plus 15 upon 4. Okay, and now I can say the coefficient of x will be basically byx. So therefore byx is equal to 9 upon 4. Now if this one is y on x and the other one has to be x on y, so therefore 25x is equal to 4y plus 17 is the regression equation of x on y. एंड therefore if मैंने x को एक साइड पे रखा तो यहाँ पे I'll get 4y divided by 25 plus 17 upon 25. तो जो कोएफिशिएंट है y का becomes the bxy regression coefficient. So this is bxy is equal to 4 upon 25. एक बार ये assumption बना लिया है, उसके बाद हमें चेक करना है whether our assumption is right or wrong. कि क्या ये x on y था और ये y on x था, कि हमने सही चूज किया है. सो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं. सो byx इंटू bxy इज इक्वल टू 9/4 इंटू 4/25 विच इज इक्वल टू 9/25. ये लेसर देन 1 है
If it is lesser than 1 or lesser than equal to 1, तो हमारा assumption was right. So therefore our assumption is right. अगर सपोज ऐसा नहीं होता, इधर ग्रेटर देन 1 को चाहता, तो फिर उल्टा सिलेक्ट करना चाहिए था, इसको x ऑन y और इसको y ऑन x. ठीक है. एंड मोस्टली हमारे टेक्स्ट बुक में पहला वाला ही होता है y ऑन x और सेकेंड वाला होता है x ऑन y. तो यू कैन ऑलवेज टेक इट दैट वे एंड चेक. मोस्टली वही होता है. सो नाउ देयरफॉर वी हैव टू फाइंड r. सो वी नो दैट r इज इक्वल टू r स्क्वायर इज इक्वल टू by(x) into bxy. So therefore I can say that r will be square root, and हम सिर्फ पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे क्योंकि by(x) and bxy दोनों पॉजिटिव है. So r should also be positive. Positive square root of 9/25, which is 3/5. So 3/5 is nothing but 0.6. 30 हो जाएगा ना. तो therefore this is the final answer. X bar is equal to 2, Y bar is equal to 8.25 and R is equal to 0.6. In a partially destroyed laboratory record of an analysis of regression data, the following data are legible. मतलब कुछ तो डिस्ट्रॉय हो गया है एक लैब में और वहाँ पे हमें सिर्फ इतना ही पढ़ने हो रहा है. लेजिबल मतलब जो पढ़ा जा सकता है. वो बोलते हैं ना टीचर्स की, इफ योर हैंड राइटिंग इज वेरी बैड, दैट योर हैंड राइटिंग इज नॉट लेजिबल. Okay, now variance of x is equal to 9, ये पता है. दोनों regression equations पता है हमें. And on the basis of the above information, find the mean values of x and y, and then find the correlation coefficient between x and y. मतलब हमें r ढूंढना है. तो ये तो बिल्कुल ही पिछले क्वेश्चन के जैसे फर्स्ट टू पार्ट्स. एंड नेक्स्ट इज फाइंड द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y. तो दिस इज एक्स्ट्रा, तो उसके लिए ऑफकोर्स हमें वेरियंस ऑफ x will be useful. So let's start. First of all, we want to find the mean values of x and y. For that, we have to solve both the regression equations simultaneously. So I have that 8x minus 10y is equal to minus 66 and 40x minus 18y is equal to 214. So we have to convert this. So I'm going to multiply this one by 5. तो ये हो जाएगा अभी 40x माइनस 50y एंड 66 इंटू 5 करना हो तो पहले 6 इंटू 5 कर लो तो 30 हो जाएगा. और अब 30 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो तो यू विल गेट 330. सो दिस इज माइनस 330. नाउ वील सब्ट्रैक्ट दीज टू. सो ऑन सब्ट्रैक्टिंग दिस इज माइनस, दिस बिकम्स प्लस, दिस बिकम्स प्लस. तो this gets cancelled and now we have 50 minus 18. तो पहले तो this becomes 32y is equal to, इन दोनों को तो ऐड करना है तो we get 544. okay, and now basically what we do is we divide. So y is equal to 544 divided by 32. पहले मैं 4 से डिवाइड करती हूँ तो देखते हैं क्या मिलता है. 4 8s एंड यहाँ पे 4 1s देन 1 कैरी फॉरवर्ड होगा तो 3s तो 2 कैरी फॉरवर्ड होगा तो 6s. स्टिल डिविजिबल है ये. 4 से वापस कैंसिल करते तो वी गेट 2 एंड हियर वी गेट 3s एंड 4s. सो दिस इज स्टिल डिविजिबल, सो वी गेट 17 ओवर हियर. सो बेसिकली आई गेट दैट y bar is equal to 17. This is our first value. एंड आई ऑल्सो हैव टू फाइंड x bar. तो 17 को सब्सटीट्यूट कर दो कोई भी इक्वेशन में एंड देन यूल फाइंड द वैल्यू फॉर x. 8x माइनस 10 इंटू 17 तो हो गया 170 इज इक्वल टू माइनस 66. सो देन वी हैव 8x इज इक्वल टू 170 माइनस 66 विच इज इक्वल टू 104. So now I have to divide by 8. तो x is equal to 104 divided by 8. इसको मैं डायरेक्टली डिवाइड करूँ तो 8 1s एंड फिर 2 रह जाएगा तो 24. तो ये एक्चुअली डिविजिबल है. 8 1s फिर 2 रह जाएगा तो 3s. तो x bar is actually equal to 13. This is the answer for the first question, that
y bar is equal to 17 and x bar is equal to 13. Now to find the second one, we have to now again guess ki which one is y on x and which one is x on y. So in the second part, let me assume that the first equation is y on x. So assume that 8x minus 10y plus 66 is equal to 0 is the equation of y on x. So therefore, I can say that 10y is equal to 8x plus 66, and if I divide throughout by 10, then I get y is equal to 8 upon 10x plus 66 divided by 10. जो भी जिसके ऊपर रहता है, लाइक y ऑन x है तो y को अकेले रखो एक साइड पे, ठीक है, तो यू विल फाइंड द वैल्यू फॉर बी वाई एक्स. तो बी वाई एक्स इज द कोएफिशिएंट ऑफ x विच इज इक्वल टू 8 upon 10. Now if this is y on x and the other one is x on y, so x on y wala is actually 40x minus 18y is equal to 214 is x on y. इसमें अब हम x को एक साइड पे रखेंगे और बाकी सब कुछ को दूसरे साइड पे. So therefore 40x is equal to 214 plus 18y. And now let me divide by 40 throughout. So I get x is equal to 214 divided by 40, ये तो constant term है, plus 18 divided by 40 into y. तो जो भी coefficient है of y, that is going to be bxy, which is 18 by 40. Now to check अगर हमारा assumption सही है कि गलत है, we have to multiply these two. So bxy into byx is equal to 18 by 40 into 8 upon 10. तो इसको reduce करते हम, तो of course 8 ones are 8 5s are. So this we are getting as 18 divided by 50, which is lesser than 1. Therefore our assumption is right. So therefore if I want to find r, then I take that r square is equal to byx and bxy, which implies that r is equal to square root of 18 divided by 50. And now we will take the positive square root because both bxy and byx are positive. इधर हम reduce कर सकते हैं as 9 upon 25. So this becomes that r is equal to 3 upon 5, just like the previous question. Okay, so this is our answer for r. So this is the second question. Now the third part finally. Third part में हमारे पास हमें ढूंढना है standard deviation of y. This is what we want to find. Now there is a formula that byx is equal to r sigma y upon sigma x. Okay, and we have sigma x क्योंकि हमें variance of x दिया है as 9, so that means that sigma x square is equal to 9, and we can always find sigma x from there. So let me substitute whatever I know. byx का वैल्यू हमने निकाला था as 8 upon 10, r की वैल्यू यहाँ पे है 3 upon 5, sigma y we have to find and sigma x होगा 3. okay, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाता है, एंड इस 5 को दूसरे साइड पे लेके जाओ तो फिर यू गेट दैट सिग्मा y इज इक्वल टू 8 अपॉन 2 जो है 4, राइट. सो 5 और 10 कट होके 2 आएगा. So therefore I get that sigma y is equal to 4. That is the answer for the third part. In the third question, we are given that for 15 students of a class, the regression equation of the marks in statistics on the marks in accountancy is given as 3y minus 5x plus 180 is equal to 0. मतलब हमें x on y का equation दिया हुआ है. The mean marks in accountancy is 44. Accountancy is for y, so this is y bar, okay, and the variance of the marks in statistics is 9/16 of the variance in the marks of accountancy. मतलब हमें variance का ratio दिया है kind of, okay, and then we are given that find the mean marks in statistics. मतलब हमें x bar ढूंढना है and the correlation coefficient between the marks in the two subjects. So we are supposed to find r after that.
So first of all, let me write down the given data in a more mathematical way so that ज़्यादा confusion ना हो. So first of all, हमें x on y दिया हुआ है as 3y minus 5x plus 180 is equal to 0 and y bar is given as 44. Next, variance of marks in statistics, मतलब that is sigma x square is equal to 9 upon 16 of variance of marks in accountancy. So that is sigma y square. Okay, and what are we supposed to find? To find x bar, and second thing that we have to find is r. Okay, now let's start with x bar first. x bar ढूंढने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें पता है कि अगर यहाँ पे हम y बार को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो जो भी वैल्यू x की आती है वो x बार होता है, राइट? ये याद रखना चाहिए कि इफ़ यू पुट y बार हियर देन यू विल गेट x बार. सो लेट मी सब्स्टिट्यूट y बार इन x on y. So put y bar is equal to 44 in regression equation of x on y. Then I get that 3 into 44 is minus 5x is plus 180. Now 3 into 4 is 12 and 12 into 11 क्या होता है? 132. Like I've taught you the trick before. 1, 2 को अलग लिखो, इनको ऐड करके बीच में लिख दो. So 132 minus 5x plus 180 is equal to 0. Now मैं 5x को दूसरे साइड पे लेके जाती हूँ और यहाँ पे ऐड कर देती हूँ. So I get 312 is equal to 5x and therefore now I'll get x is equal to 312 divided by 5. Now on dividing I get that first of all this is 6 फिर 12 रह जाएगा तो that becomes 2 and now 2 remains. So मैंने डेसिमल लगा लिया तो मुझे मिलेगा 4. टेक्स्ट बुक में आंसर रॉन्ग दिया है, मुझे लगता है 62.5 दिया है. द आंसर इज 62.4. नाउ उसके बाद सो दिस इज द वैल्यू फॉर एक्स बार. ओके, सो वी हैव ऑलरेडी फाउंड द फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग हमें अब आर ढूंढना है. आर ढूंढने के लिए हम ये यूज़ करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से पहले बी एक्स वाई निकाल लेते हैं बिकॉज दिस इज द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई. सो rearranging that I will get that 3y plus 180 is equal to 5x and if I divide by 5 then I get that 3y divided by 5 is equal to 180 divided by 5. जो भी कोएफिशिएंट है यहाँ पे of y is actually bxy. okay, एंड बी एक्स वाई अगर ये मिला है, हमें अब आर ढूंढना है. हमें पता है एक फॉर्मूला, बी एक्स वाई इज इक्वल टू आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई. ठीक है, यहाँ से हमें सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई मिल जाएगा. सो अगर सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई सिग्मा वाई स्क्वायर इज 9 अपॉन 16, तो सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई विल बी 3 अपॉन 4, राइट? एंड बी एक्स वाई इज 3 अपॉन 5. तो 3 और 3 तो कट हो जाता है और ये ऊपर चला जाएगा. तो वी गेट दैट r इज इक्वल टू 4 अपॉन 5 विच इज इक्वल टू 0.8. ये 40 हो जाएगा ना. तो दिस इज द वैल्यू फॉर r. In the fourth question, for a bivariate data, the regression coefficient of y on x is 0.4. तो बेसिकली हमें by(x) दिया है as 0.4 एंड regression coefficient of x on y मतलब हमें bxy दिया है as 0.9. okay, and they are asking us that find the value of variance of y. So we have to find sigma y square if variance of x is given as 9. okay, so for this we can use any formula, either byx या bxy का, लेकिन दोनों फॉर्मूला में हमें r की ज़रूरत है. So first of all let's find r. So I know that r square is equal to byx into bxy. So therefore I can say that r is equal to positive square root, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही पॉजिटिव है,
of 0.9 into 0.4 and this is 0.36. So uska square root is 0.6, right? And now if I have to find sigma y square, so let me use the formula of byx, which is equal to r sigma y divided by sigma x, and therefore sigma y is equal to byx into sigma x divided by r, which is equal to byx is 0.4, sigma x is 3 क्योंकि sigma x square is 9 divided by r, which is 0.6, right? And now ये point और point तो cut हो जाता है, so this is basically 4 into 3 मतलब 12 divided by 6, तो इसका आंसर हो जाता है 2. So sigma y अगर 2 है तो sigma y square यानी कि variance of y will be 4, and that's your answer. Fifth question में we are given the two regression equations, फिर हमें कोरिलेशन कोएफिशिएंट ढूंढने मतलब r ढूंढने बोला है एंड सिग्मा x अपॉन सिग्मा y ढूंढना है हमें. तो पहले तो लेट्स स्टार्ट विद फाइंडिंग r. तो उसके लिए मुझे ना ढूंढना पड़ेगा कि पहले तो व्हाट इज byx एंड bxy. उसके लिए आई हैव टू सिलेक्ट कि इसमें से कौन सा वाला रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y है और कौन सा y on x है. So let us assume that the first one is the regression equation of y on x. So therefore I have that 3y is equal to 6 minus 2x, and therefore I have that y is equal to minus 2 by 3x plus 6. Okay, and therefore I get that byx is equal to minus 2 by 3. Now if this is y on x, then that means that 2x plus 2y minus 12 is equal to 0 is the regression equation of x on y. So इसमें x को एक साइड पे रखते हैं तो हमें मिलता है that x is equal to 12 minus 2y divided by 2. तो बेसिकली यहाँ पे मुझे मिलता है that x is equal to 6 minus y. तो your bxy is equal to minus 1. So first I have to check whether my choice is right. So let me do byx into bxy, which I get to be 2 upon 3, which is lesser than 1. So assumption is right. Okay. r square अगर 2 upon 3 आ रहा है तो इसका मतलब है that r is equal to, यहाँ पे नेगेटिव आएगा because both byx and bxy are negative square root of 2 upon 3. And I'm going to leave this right here only because we really don't know how to find the square root of this number, but we'll just keep it here. And the next thing that they've asked is to find sigma x upon sigma y. अब उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा फॉर्मूला. तो byx is equal to r sigma y upon sigma x. ठीक है, तो एक्चुअली मैं bxy यूज़ करती तो बेटर होता. आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ दिस फॉर्मूला. लेट मी यूज़ bxy इज इक्वल टू r सिग्मा x अपॉन सिग्मा y. वैसे तो ये भी रॉन्ग नहीं होता, इसमें भी हम ढूंढ ही सकते थे, लेकिन मैंने सोचा कि ये ईजियर है. इसका आंसर वैसे भी -1 आया ना, तो -1 इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन 3 सिग्मा x अपॉन सिग्मा y. And this implies that if I take this to the other side, I get that sigma x upon sigma y is actually equal to square root of 3 upon 2. तो यहाँ पे ही छोड़ देते हैं क्योंकि हमें ये 1.5 का स्क्वायर रूट निकालना, वी डोंट नो हाउ टू डू दैट राइट विदाउट अ कैलकुलेटर. एंड जो टेक्स्ट बुक में आंसर है, आई मीन इट इज़ बोथ ऑफ दीज आर डिफरेंट. सो इन केस ये एग्जाम में आता है, इवन इफ यू लीव इट एट दिस स्टेज, आई डोंट फील दे विल कट योर मार्क्स फॉर दिस. यूजुअली दे मेंशन अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड नंबर है उसका स्क्वायर रूट दे देते हैं साइड पे. तो मुझे लगता है शायद टेक्स्ट बुक में इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो सकता है, बट you can leave it here also. I hope you've understood the concept and that is more than enough. In the sixth question, we are given x bar, y bar, byx, bxy and we have to estimate y when x is equal to 50. इसका मतलब है कि हमें regression equation of y on x calculate करना है, right? So what is the formula? It is basically y minus y bar
इज इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार, और सारा डेटा तो हमें दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं सब्सटीट्यूट करती हूँ. सो y माइनस वाई बार की वैल्यू है 28 इज इक्वल टू बी वाई एक्स इज माइनस 1.5 x minus x bar which is 53. Now what I would suggest is that इन लोग ने रिग्रेशन लाइन नहीं पूछा है ना, तो यहाँ पे ना x का वैल्यू डाल दो so that calculations easy हो जाए. So y minus, so I'll do one thing, I'll just write a statement that when x is equal to 50, y minus 28 is equal to minus 1.5 into 50 minus 53. तो that is minus 3, right? 3 into 1.5 और पॉजिटिव हो जाएगा is 4.5 plus 28 is equal to y. So y is equal to 28 plus 4 is 32.5. तो you see how बहुत easy हो गया. एंड अगर हम नहीं करते तो हमें 1.5 इंटू 53 और ये सब करना पड़ता. तो whenever you are only asked to estimate, it is always better to substitute. 7th क्वेश्चन में वी आर गिवन द 2 रिग्रेशन लाइन्स एंड हमें बोला है कि x बार एंड y बार ढूंढना है, फाइंड द मीन्स ऑफ x एंड y. एंड उसके बाद हमें ऑल्सो बोला है दैट फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y, मतलब हमें r ढूंढना है. वापस सेम प्रोसीजर वही कि पहले साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, फिर उसके बाद गेस करो कि विच वन इज y ऑन x, विच वन इज x ऑन y, एंड वो बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई को मल्टीप्लाई करके उनका स्क्वायर रूट लेके वी विल गेट द वैल्यू फॉर r. So first let's start solving this simultaneously. तो मेरे पास है x minus 4y is equal to 5 and दूसरा वाला है 16y minus x is equal to 64. यहाँ पे ये x एक्चुअली अलग पोजिशन में लिखा हुआ है, बट अगर मैं इसको ढंग से लिखूँ तो ये माइनस एक्स प्लस 16y इज इक्वल टू 64 आएगा, राइट? लेट मी सॉल्व दीज टू, आई विल एड दीज टू. सो आई गेट दैट x तो कैंसिल हो गया, योर वी गेट 12y is equal to, on adding this I get 69. So therefore I'm going to divide this now. So y is equal to 69 divided by 12 and this becomes 12 5 is 60. So 5 फिर decimal लगाना पड़ेगा and then 9 है, तो 12 7 is 84, तो वापस रह जाएगा 6 and decimal की वजह से वो हो जाएगा 60. So this becomes 5.75. Now we have to find x bar. उसके लिए I have to substitute this in place of y in one of the equations. So I'll do that in the first equation. So x minus 4 into, मैं क्या करूँगी, I will not put this, मैं इसको substitute करती हूँ, ये easier है. So 69 by 12 is equal to 5. यहाँ पे 4 1s are 4 3s are 3 1s are 3 23s are, right? And therefore we get that x is equal to 5 plus 23 which is 28. So I finally get that x bar is equal to 28 and y bar is equal to 5.75. Now second part, we have to find the correlation coefficient. उसमें क्या करना है, पहले तो अज्यूम करना है कि कौन सा x on y है, कौन सा y on x है. तो मैं पहले हमेशा की जैसे पहले वाले को y on x लेती हूँ. So assume that assume x minus 4y is equal to 5 is the regression equation of y on x. So I need to separate y. So that means that 4y is equal to x minus 5. I took this to this side and this one to this side. तो अब y is equal to x divided by 4 minus 5 by 4. इसका मतलब है कि b y x जो कि है x का कोएफिशिएंट is 1/4, right? I'll assume the other one, that is 16y minus x is equal to 64 is the regression equation of x on y. So this becomes x is equal to 16y minus 64, okay, interchange करके, and therefore from here I get that bxy is equal to 16. Now you see कैसे गड़बड़ होने वाली है. byx into bxy is equal to 1/4 into 16 which is equal to 4, which is not lesser than 1. So our assumption is wrong.
ओके, सो हमेशा लाइक आई सेड इट डज नॉट वर्क, कुछ कुछ क्वेश्चंस में वो लोग दे देते हैं ऐसे भी. सो देयरफॉर व्हाट शुड आई हैव मेड द चॉइस एज? सो देयरफॉर x minus 4y is equal to 5 is the regression equation of x on y. ठीक है, एंड देयरफॉर इफ मैंने x को एक साइड पे रखा तो आई गेट 4y plus 5 and I get bxy is equal to 4, and the other one, that is 16y minus x is equal to 64, is the regression equation of y on x, and therefore I get that y is equal to x divided by 16 plus 64. यहाँ पे जगह नहीं है, ठीक है. बी वाई एक्स इज इक्वल टू 1/16 कोएफिशिएंट ऑफ एक्स. आई विल कंटिन्यू ईयर ओनली क्योंकि बहुत थोड़ा बाकी है. सो लेट्स सेव सम पेजेस. तो यहाँ पे बी वाई एक्स 1/16, बी एक्स वाई 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 आएगा विच इज़ लेसर देन 1. तो ये सही है एक्चुअली. तो आई कैन एनी वे, आई नो कि ये सही होना ही चाहिए. तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई. इसका मतलब है कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, एंड हम पॉजिटिव साइन ही चूज करेंगे जब स्क्वायर रूट लेंगे बिकॉज दोनों पॉजिटिव आए थे. therefore r is equal to 1/2. So r is basically equal to 0.5 is the answer.